with us? 48. Yes, sir. So Okay, average okay, of then 33 to 55 will be joining. okay. Then we'll wait for another couple of minutes. Yes, sir. Yeah. So how is everything going on? So, All good, sir. Classes we are taking up in the LMS platform. okay. So have you checked all the material that we have released over here? Yes, sir. Perfect, perfect. So today you might be packed with a lot of questions for me. Okay, cool. We'll see. So I think 1, 2, 5, 6, okay, 12 candidates are there. Okay. Another 1 minute we'll wait, and then after that we'll start. Sir, you're muted, sir. We couldn't hear you, sir. Okay, I so think I'm it's saying it's mute. already 3:35, so I think we should start the session, right? Yes, sir. Yes, yes. So, good afternoon, everyone. Again, this is Paneer and strength and conditioning expert at NIS Patiala. So today, I got to know that we have a discussion on few topics. So I think today's topic for the discussion is load management, concept of training load, right? And apart from that, training principles and etc. So yes, we are keeping the floor open for the discussion. So anyone has any question, they can ask, and we'll discuss on that. Let's go ahead. If you can keep your cameras on, that's a good thing. I can even see. Otherwise, it's like I'm just talking with the screen. Yes, anyone has any question? I'm sure you have gone through the material or content that we have given or the videos that we have shared with you. So no one has question. Hello, am I audible now? Yes, yes. Yes. Yep. But do you want to discuss anything related to your topics or any query that you have, you can ask. Yes, sir. Actually, I had a doubt in this thermogenics, Okay. but it comes under, I think, designing warm up. That thing. It was Manilal sir's class. Designing warm-up. I think last time we have covered a warm-up session. This time topic for the discussion is new topics. Okay. You can message me, no doubt. I'll try to cover that. What is your doubt on that thermogenic? It was like it was given like neurologically we will be like getting some warm up kind of thing, 5 to 15 minutes kind of. Okay.
So how can we implement those things with the normal state level or part early athletes, like meaning under 14, under 16? Because whatever we learn in this SNC, like strength and conditioning, is concentrating with the higher or elite athletes, right? Yes. So whatever we learn, is there any possibility to implement all those things with the beginner level, or like when we are identifying the young talents, can we possibly be added to the training for those kids? Yes, you can add, you can implement these things with the beginners also, but make sure whenever you are implementing, these parameters with them, you should be very take care about the time, like how much time you are spending on which part of the that parameters. Okay, suppose in warm up, I think if you have last time also we have covered that RAM protocol, right? So Raise, if you are spending, how much time do you have to spend with that? Because those are the kids, they are not familiar with these terms or the exercise that you are going to give. So you need to work with the basic thing. You need to first correct with the basic exercise, and then after that you can add up new stuff with them. Might be they are lacking endurance, so startingly give them less warm up or less parameter things so that they can tolerate that amount of load while doing those things. So likewise, you can go ahead. Keep your keep it short and then keep it simple, I would say, for them, because they are the beginners and they just want to learn new stuff from you. So just, or else you can do like in the sense basic, short, and after 3 days you can change. Like in the sense you can add new exercise if they are familiar or if they are doing correctly. Okay, Victor. Okay, sir. Actually, basically, I'm an athletic coach. Okay. So I'm Okay. based in Muscat. Okay. So, Yeah, like, yeah. I have completed my level 1 training in athletics, which says that chronologically, when they are like after like 4 years, we can allow them to do 6 to 8 sessions per week and all. Okay. Okay. We are identifying them in like 7, 8 years means. So, is it advisable to start with a scientific training for them with 11, 12-year-old kid? Yeah, you can, but again, I'm emphasizing on that stuff, like how much load you're going to put on them, because at the end, if suppose that load is spiking up, they might get injured. They might end up with an injury. So you need to take care of that. That how many sessions you are covering with them, and how many sessions you want to keep. No doubt, you can keep different sessions or scientific sessions with them also, but make sure you need to manage a load. But whereas the science says it is not advisable to specialize them. Just to wait. No problem. Sir. Take it. Yeah, go ahead. Yes, sir. But the same science says that until they cross 16 years, we are not supposed to specialize them in a particular event or activity. Yeah, specifically, like in the sense, like if you are emphasizing on specific event or activity, I would say yes, in that till that age you can give them different stimulus, and then after that specialization can work with them, like which event you want to send them, which event they actually interested in, and which event they can particularly can do better. So after that, you can think of specialization. But implementation wise, I would say you can implement scientific stuff with them. You can implement your sessions with them, but make sure you need to keep a track on their loading system. Yes. How much load you are putting, and whether they are able to tolerate that amount of load which you are emphasizing on them or not. Because here we have seen a lot of players, when coach thought of putting 2-3 sessions in a day, or like something like 3 sessions, or kind of increasing the load, they end up with the injury, hamstring tear, calf strain, back strain.
So likewise, at the end, they have to decrease the load, or they need to think in such a way so that they can do two heavy session and after that activation kind of session or something like that. So you need to come up with a proper plan for that. Yes. Good evening, sir. Hi, hello, good evening. Sir, the training load which have been studied, which we have studied, is Yes, we can yes. decide about the training load only after the effects of the training, Yes, okay. whether it is optimal load or overload or underload. Yes, yes. We can okay. define that only after we see the results. Yes, okay. But that will be a long process, or maybe at least we take 15 days, 20 days, like this 1 month maybe. Yes, So yes. is there any way we can develop, talking about to the athlete or the coach himself कि पहले ही इसको decide किया जाए कि ये optimum level है load का? Yes, yes. So क्या होता है? See, the thing is, जब भी आप schedule और session decide करते हो, suppose if you have assigned, जैसे आप weekly session design करते हो, right, for your athletes. Yes, sir. So Monday you have kept the session, early morning session, and then Tuesday you have Monday evening you have kept the session. So make sure आप क्या कर सकते हो उसको, मतलब आप जानने के लिए कि ऐसे तो टाइम लगेगा actual load को जानने के लिए. Yes, But yes, sir. उससे पहले अगर आपने जानना है तो आप एक रफली क्या कर सकते हो कि एक उसका आरपी डिसाइड कर सकते हो, रेट ऑफ परसीविंग एक्सर्शन फॉर योर ओवरऑल सेशन का. सपोज अगर मैंने कोई सेशन डिजाइन किया हुआ है तो मैं उसको क्या करूंगा, जैसे इफ आई शो यू वन स्केल, लास्ट टाइम इवन आई हैव शोड. सो ये हमने एक स्केल डिजाइन किया हुआ है. इज इट विजिबल? Yes, sir. सो ये है आरपी का स्केल. ओके, रेट ऑफ परसीविंग एक्सर्शन. तो आप क्या कर सकते हो, 0 to 10 में से आप अपने सेशन का लोड अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हो कि इसका लोड इतना होना चाहिए. ओके, जैसे आज का अगर मैंने सेशन डिसाइड किया है मंडे का, जो मैं हैवी रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको ग्रेडिंग दे दूंगा 6. इफ यू सी यहाँ पे 6 ना, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे हार्ड और रियली हार्ड के बीच में. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप इवनिंग का सेशन डिसाइड करोगे उसका मैं आरपी दे दूंगा 3 या 4. तो 3 या 4 पे है लिखा हुआ, 3 में मॉडरेट इजी लिखा हुआ है. ओके, तो आप ऐसे अपने सेशंस को डिवाइड कर सकते हो कि मंडे को मेरा सेशन हैवी होगा कि लाइट होगा. ओके, एंड देन इवनिंग का मैंने कैसे रखना है. फिर आप क्या कर सकते हो, एट द एंड ऑफ फिनिशिंग योर सेशन आप बच्चों का आरपी भी ले सकते हो, रेट ऑफ परसीविंग एक्सर्शन, कि बेटा कि प्लेयर्स यू हैव टू टेल मी कि व्हाट डू यू फील अबाउट माय सेशन, कि आपके ऊपर कितना हैवी था. यस सर. ओके, तो क्या होगा कि आप अपने से भी कंपेयर कर सकते हो कि कोच ने क्या डिसाइड किया था आरपी उस सेशन के लिए और बच्चों ने क्या दिया. अगर आपको लगता है कि आपका माना हुआ आरपी, जैसे आपने डिसाइड किया हो आरपी, द डिसाइडेड आरपी व्हिच यू हैव डिसाइडेड इज लेस फॉर प्लेयर्स, देन यू कैन इंक्रीज द आरपी नेक्स्ट टाइम सेशंस के लिए. बट आई वुड से जस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आरपी के सेशंस का for 1 week. You can easily track the load. Have you guys heard about acute chronic workload, or do you know about that acute load or chronic load, how to calculate, कैसे करते हैं? No sir, there nothing. Okay, so अभी क्या होता है, you just write down the main points. After that you try to read, you will get to know about that. अगर बाद में कोई क्वेश्चंस होंगे you can ask me later. So acute load का कैसे होता है कि जैसे हमने हर सेशंस का मैंने आरपी डिसाइड किया हुआ है कोचेस ने. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक तो आप ड्यूरेशन हम सेशन का नोट डाउन करते हैं और उसके बाद हम उसका आरपी नोट करते हैं. जब ड्यूरेशन और आरपी को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उससे हमारा टोटल लोड आ जाता है एक दिन का. ओके, यस सर. सो अगर इफ आई हैव टू से आरपीई एंड ड्यूरेशन, ओके, सो इफ यू कैन सी हियर, लाइक आरपीई अगर मेरे सेशन का होता है 4 और ड्यूरेशन मेरे होती है 2 घंटे की,
तो मतलब Yes, sir. 60 120 मिनट आते हैं, ठीक है। Yes, तो yes, sir. 120 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे 4 के साथ, ओके। सो दैट इज Yes, sir. आपका एक टाइम का लोड आ जाएगा, ओके, Yes, दैट sir. इज वन टाइम लोड। सो ऐसे ही आपको सुबह में भी लोड आया होगा एंड शाम को, सो यू कैन Yes, sir. ऐड दैट लोड। तो आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो जहां पे Yes, आप sir. सेशन का आरपी का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, मतलब इन द सेंस Yes, sir. लोड का कैलकुलेशन कर सकते हो। जब वीक का लोड इकट्ठा हो जाएगा यू विल गेट 1 वीक लोड, ऐसे Yes, sir. 2 वीक, तो आप 4 वीक जब करोगे तो 1 वीक का जो लोड होगा उसको हम एक्यूट लोड बोलते हैं, ओके। जैसे Yes, sir. हम 4 वीक का इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम क्रॉनिक लोड बोलते हैं। Okay, sir. उसकी कैलकुलेशन होती है फाइंड आउट करने की, तो Yes, उससे sir. हम फिर बाद में एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो निकाल लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि एक रेंज होती है, उसकी रेंज हमारी होती है 0.8 to 1.3। Yes, sir. अगर आपको लगता है कि वो रेशियो जो है स्पाइक अप हो रही है 1.3 या 2 से ऊपर जा रही है, तो Yes, मींस sir. यू नीड टू डिक्रीज द लोड ऑन योर एथलीट जो आपने सेशंस का डिसाइड किया हुआ है। अगर आपको Yes, sir. लगता है कि मेरी 0.8 से कम कैलकुलेशन हो रही है, तो मतलब आपको उसमें ऐड अप करना पड़ेगा अपने सेशंस का लोड। Yes, sir. तो these are the new scientific things जो कि निकली हुई है और मतलब कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है ऑन फील्ड में भी। तो सर इसमें इश्यू क्या होता है ना कि अगर कोई सीनियर एथलीट है या कोई एलीट एथलीट है या जो पहले खेल रहा काफी साल से, वो तो बता देता है कि मुझे ओवरलोड हो रहा है, या लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं 12 साल 13 साल के, दे कैन नॉट, वो कई बार है ना एंथुसिज्म में रनिंग करते रहते हैं, बताते नहीं है, और वो दिखाने के लिए भी कई बार एक्सरसाइज करते रहते हैं, बताते भी नहीं इंजरी है या हमें जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वही बात है, मतलब कि इन दिस सिनेरियो वी नीड टू वर्क वेरी स्मार्टली, क्योंकि अभी यही चीजें जो हम पिकअप नहीं कर पा रहे, मतलब इन द सेंस वी आर लैकिंग बिहाइंड। आई एम गिविंग एग्जांपल, आई हैव ए स्टूडेंट, आई एम ए क्रिकेट कोच, मैंने उसको प्रोग्राम दिया, उसने मुझे बताया नहीं कि मुझे इंजरी हो गई है, मुझे पेन है, मैंने उसके फेस से देखा, एक्सप्रेशन देखा कि यार मुझे तो दिक्कत लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, मुझे पेन है, मैं कहा बताया क्यों नहीं मुझे, कह रहा सर मुझे लगा आप सोचोगे मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये वो। तो बच्चे टेंड करते हैं कि वो अपने आप को छुपाते भी हैं, तो कई बार हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि नहीं प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। Yes, yes. So it's like it means that he has not developed that type of trust with you also. Maybe that can be issue, maybe there are other issues also. Yes, other issue also might be you being a coach, you might end up saying कि आप training में ना आओ, in the sense या फिर there was one more issue was there. His father also is a physical education teacher. His father developed another training load for him. So he kept continuing both for according to me and according to his father also. That was the main reason behind that. Yeah, ऐसा भी हो सकता है obviously. And then one more thing I got to ask. 2 minutes. Let me Yes, sir. just 2 minutes. Yeah, go ahead. There is one more term. Yes, yes. yes. Okay, sir. Training impulse. Okay. I have read somewhere that training impulse is a method to quantify training load. Okay, training impulse. It's calculated by heart rate, reserve method, and duration of exercise. Yes, so that is also a type of key method that is using for the load के लिए. But अभी के लिए आप क्या कर सकते हो? Suppose you being a coach, आप अपने एक तो RP से आप उसका कर सकते हो, और दूसरा आप ड्यूरेशन, मतलब कि कितने टाइम के लिए आपने वो सेशन रखा हुआ, तो आप जो अपना प्लान बनाते हो ना, माइक्रोसाइक्लिक प्लान, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि वहां पे ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हो और अपना आरपी भी मेंशन कर सकते हो। सपोज अगर आप 5 एथलीट्स के साथ काम कर रहे हो, सो मेक श्योर ट्राई टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दीस थिंग्स फॉर एवरी डे, मतलब मॉर्निंग का भी, इवनिंग का भी। यस सर।
Then उसके बाद you'll get to know, okay, I have to multiply, and then after that I'll get one session का load, second session का load. आप उसको जब दोनों को plus करोगे, so you'll get whole one session का load. Yes, sir. I can't share a screen, otherwise I would have shown you something like how I have done with my athletes. Okay. सर बाद में ग्रुप पे शेयर करवा दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में. Sure. Or might be in the next session I'll show you कि कैसे and keep it in an Excel sheet that will be helpful for you. Easily Yes, sir. आप वहाँ पे calculate कर लोगे. ठीक है? यस सर. Yes. और सर अकॉर्डिंग टू लोड अब रिकवरी पे भी आते हैं कि रिकवरी को कैसे डिफाइन किया जाए कि इतना पीरियड एनफ रहेगा, इतना हमें गैप देना है, एक दिन का रेस्ट, 2 दिन का रेस्ट या 24 घंटे का रेस्ट. Correct. So for recovery, it's depending upon like which phase of training you are and which Okay. phase of a competition you are. Suppose अगर आप off season में कर रहे हो, right? So Yes, sir. you can work on accessory things, you can work on strength. Suppose जो आप जिन parameters के ऊपर आप काम करना चाहते हो, ज़्यादा Yes, sir. focus करना चाहते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो. ठीक है? Yes. जैसे आप competition के पास में आ रहे हो, तो general preparatory period हो गया आपका या pre competition हो गया. तो Yes, आप उसमें स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज के आप काम कर सकते हो और स्पेसिफिक रिकवरी के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो, बिकॉज दैट इज अ पीरियड व्हेन यू नीड टू वर्क विद मोर रिकवरी मोडालिटीज, क्योंकि Yes, उनका कंपटीशन पास में आ रहा है. सो यू कांट लोड देम इन सच अ वे दे एंड अप विद द इंजरी. यस सर. सो डिपेंड करता है कि आपका प्लेयर्स जो है, आपकी टीम जो है, वो कौन से फेज में चल रही है. नो डाउट अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है और जनरल प्रेपरेटरी फेज चल रहा है, तो हफ्ते में अगर आपने 2 सेशंस भी रिकवरी के रखे हैं, उनको वेडनेसडे और सैटरडे को, दैट Yes, sir. कैन वर्क, दैट कैन Yes, sir. वर्क. ओके, जैसे यूजुअली क्या होता है, आई थिंक सभी के स्पोर्ट्स सेशंस में ये होता है कि मंडे ट्यूसडे दे हैव केप्ट सेशंस Yes, sir. एंड देन वेडनेसडे को रिकवरी हो गया, राइट? Kind Yes, of sir. Yes, sir. off day, right? Yes, sir. Evening mein. So there you can keep a work on recovery. Either you can send them for swimming, do foam roller, or do other Yes, sir. things like ice immersion or like water Yes, sir. immersion. और जैसे फिर उसके बाद सैटरडे को हो गया हमारा रिकवरी का. जैसे थर्सडे फ्राइडे यू हैव वर्क एंड देन सैटरडे अगेन आपका evening off. So that time also you can send them for massage or other recovery strategies. Okay. Yes, sir. Yes, sir. When it's a competition phase, जैसे right now I'm with the Indian men's judo camp लगा हुआ है यहाँ पे. So in this phase, recovery is the like जिसको बोलते हैं ना कि very much needed thing. तो Yes, sir. उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? After finishing the session, you can keep a small recovery break for them. जैसे कि no doubt Wednesday और Saturday को तो आप recovery रखोगे, 2 days kind of off. But जब क्या होता है, जब आपको लगता है कि heavy session हो रहा है मंडे का, अगर मेरे को लगता है कि that session is heavy, so after that session you can keep a recovery like water immersion recovery for them. कि जो Yes, sir. आजकल टब से मिलते हैं ना, राइट, वो जो Yes, जकूज़ी sir. ऐसे लंबे से मिलते हैं, वो आप रख लो सिंपल से, और बस Yes, उनको sir. बोलो कि okay, just after finishing a heavy session, go and immerse your body in that. Yes, sir. Or else what you can do after finishing a session, at least try to spend 10 to 15 minutes on recovery strategies. Like you can do foam roller, or tell them to do like good massage to each other, kind of relaxation Yes, sir. massage, Yes, sir. partner assisted massage, कुछ भी. तो उसमें Yes, क्या sir. करोगे, आपका number of days का recovery का वो increase हो जाएगा. Yes, sir. Okay, so you need to find out when is the heavy session and Yes, when sir. I can add up those recovery drills. और अगर सुबह का भी आपने मीडियम सेशन रखा है, शाम को आपने हैवी रखा हुआ है, सो शाम का जो सेशन होना चाहिए आपका, फिर उसमें आप यू कैन आस्क देम टू डू फोम रोलर और रिलीज विद अदर थिंग्स. हम तो सर यहाँ लोकल गांव, यू कैन कीप रिकवरी सेशन फॉर देम. हम तो सर यहाँ लोकल गांव में रहते हैं, तो कंपटीशन भी पास आ रहा है, अगर बॉडी रिकवर नहीं होगी, सो दे कांट प्ले, राइट, दे Yes, कांट sir. परफॉर्म गुड. सो इन दैट फेज you need to work more with the recovery strategies. Yes, sir. I hope I answered your question. Yes, sir. I got you. Hello. Hello. Hello.
Okay, anyone has any question now? They can ask. Hello. 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 Hello, good evening, sir. Hello. 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 I can't hear anyone. Hello, good evening, sir. Hello. Hello, Ranveer Singh. Hello. Yes, sir. Can you hear us? Sir, I think you are not audible. Hello. No, no. I can't hear anyone. Hello. 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 Yes, yes. So we can hear you, sir. Yeah, so anyone has any question? Sir, can you hear me, sir? You guys are not audible. I can't hear anyone. सर आप ब्लूटूथ दोबारा ज्वाइन कीजिए. Yeah. Now it's audible. Yes. सर ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए सर. Yeah, it's audible now. Yeah, go ahead. Okay, sir. Yes. Yes. Yeah. So I hope I answered your question, right? Regarding recovery. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, one Yes, more question is there. Yeah. Go ahead. What is overcompensation, overreaching, overtraining, supercompensation? What is the difference between all these things? So see, there is only mild difference between all these terms, and when it comes to practical aspect, it's very needed things that we need to take care. Okay. Yes. So overtraining, when you are not changing your stimulus, and then volume wise when you are training, so you might be following the same program. Suppose if I am following same program last from 2-3 weeks, so Yes, sir. that can reach to kind of either I'm putting more stress on my muscles or players के muscles के ऊपर. So that is kind of overtraining. And if suppose someone is doing extra work, suppose यहाँ पे players को भी क्या होता है कि they have a habit of doing extra, कि apart from their schedule they want to Yes, do sir. something extra in the sense कि अपनी मर्जी से, या फिर उसके पापा ने उसको बोला है कि हाँ his father is coach and then you have to do this that. Yes, sir. Okay. So this is kind of, yes, when stimulus is exceeded beyond the range which you want to add in your training, so that is kind of overtraining, right? Yes, sir.
And then apart from that, what you have said, overreaching, Overreaching. right? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. I need to disconnect. Hello, yeah. Hello. Yes, sir. Can you hear now, sir? Wait a second. It's not all. Yeah. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yeah, even now it's better. Yes. And then other thing is overreaching. Overreaching means when you are giving the same stimulus and then you are not changing into kind of deloading, like in the sense you are repetitively doing the same work, and after that there is a certain point where the performance gets stopped. And Yes, I sir. can't see any change in my training or performance. So that is Yes, sir. point where you have reached, but after that, I'm not getting any kind of result from that, right? Yes, sir. Yes, sir. और उसका क्या है कि how we can overcome these things when you are training for a specific suppose you being a coach and then you have given a particular schedule to your athlete or players को, to make sure keep 1 week or after 3 weeks or 4 week के बाद a period when you are deloading with that workout. Yes, sir. Either you are decreasing the volume of that workout or decreasing the number of reps or sets, like up to you, like how do you want to do. Just Yes, sir. suppose we being a strength and conditioning expert, what we usually do, we usually work, like suppose if I'm working on a strength block or speed strength workout or power workout or Yes, sir. endurance के ऊपर अगर हम काम कर रहे तो हम क्या करते हैं, gradually we increase the load and then after 3 weeks or 4 weeks decreasing the number of reps, like 40% of 1 RM we decrease and ask them to do only 2 reps, two sets of that workout. Yes, sir. Yes, sir. अगर वो 3 करते हैं या 4 करते हैं, उसके बाद लोड इंक्रीज किया 4 है, तो उसके बाद 4th वीक में हम उनको बोल देते हैं कि ओके नाउ यू हैव टू परफॉर्म ओनली 2 सेट्स, दैट्स ऑल. Yes, sir. तो उधर क्या है कि हम वो एक स्टिकिंग पॉइंट आने ही नहीं देते, लोड डिक्रीज होता है एंड देन अगेन सुपर कंपनसेशन एक अचीव हो जाती है. Yes, sir. Okay, so these are the things that we need to work and then focus more when we emphasize or implement any program. Okay. One question from yes, Archana, go ahead. Good evening, sir. You can go ahead with the question. She just Sir. raised her hand. सर जब बच्चा आता है सीखने के लिए तो बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर सीखना उसके आगे का प्रोसेस सीखता ही नहीं है, तो ये ओवर रीचिंग में आएगा क्या? एक पॉइंट जब आता है जब वो सीखता ही नहीं है, अब वो सीखना बंद कर देता है, आगे के स्टेप सीख ही नहीं पाता है. Okay. And which athlete you are considering that, in the sense you are talking about the जो beginners रहते हैं उनकी बात बोल रहे हो या फिर it's general you are saying? सर बिगिनर्स. Okay, beginners. Yes, it could be anything. See, the thing is, it's depending upon that athlete, and you need, being a coach, you need to be very smart whether he has been training only with you or he's putting extra work apart from your training. So you need to come up with the components, or you need to find out why this is happening. It could be overtraining, in the sense might be he's training somewhere else
and then at that point he's not interested in that program, what I want to implement on that, right? If he's following, suppose if you are sure about that thing, yes, he is not training with anyone, he's not doing extra what I have given to him, then could be the reason of overreaching. Yes, is in that stage where I need to change the stimulus, or might be he's kind of kabhi kya hota hai ki being a athlete, they get used to okay, okay, fine, this coach like is repetitively doing same workout or giving us same thing, and I'm not like willing to do that. So that could be the reason of that. So it's like it's a compound thing that you need to check whether it's a overtraining or overreaching or exactly what he's facing. Okay, sir. Thank you, sir. So the thing is, see, being a coach, what I felt it, that first thing is getting a rapport with your athlete. Sometimes athletes are blindly trusting you कि sir आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, we will follow what you want, you are going to give us. That's a good thing, no doubt, because you have developed a rapport. Some coaches are facing that problem. Yes, they haven't developed a rapport with the athlete. They are not confident in their workout, the program which they want to implement. At the end, player will not listen or follow their program. ऐसा भी होता है. Even in my personal experience also, I have gone through like these phases when I felt it. My few athletes are actually willing to do your workout or program, or some athlete might be okay doing their own training or something like that. So these are the things that we need to rule out, like we need to work out with from our side. If we really want to lead a team, or we really want to do something, so that is very much important. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah, welcome. Anyone has any question? Another 10 minutes, and then after that we will disconnect. So good evening, sir. Hello, good evening. Sir, my doubt is when we are giving the training load for the under 14 boys and girls. So for the when we plan for the annual, how we can able to give the percentage of a load, percentage we will be giving, no, 80%, 70% of the load of their 1 RM. So if we are giving in that, how many sessions we can give for 1 year? Like 100% we want to give, means the training recovery periods and training heavy intensity recovery and all. So can you give the example for runners, athletes? Any example? Oh, okay. So okay. So just wait a sec. Let me just make this also. I'm so sorry. Actually, I'm facing a lot of problem over here with sound and all. Yeah. So the thing is, when you are designing a program for yearly periodizing your plan, and then you need to decide like how much load I need to give, right, for yearly basis. So that comes before that, you need to do needs analysis. Have you heard about that? Yes, sir. Need Yes. analysis. Yes, needs analysis of your game. And then after that, the second thing, you need to come up with the competition calendar. Like, Yes, sir. how many competition you want to focus. Even last time also in periodization, we have discussed that if you are dealing with a game which has more competitions, so you need to decide like how many competition you want to keep in that plan. So यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, when we plan yearly program for them, first thing we do a lot of needs analysis. Which athlete are we planning that plan? Second thing is what is his training or competition calendar? And then third thing we usually keep in mind, like how many
which events or competitions are the major competitions that we are going to focus on. On the basis of that, you can divide your months or weeks, like which phase is going to where, like in the sense general preparatory phase and then competition phase, or like in competition also pre-competition and then competition, like that, and transition also. So you can divide into blocks, okay? Because actually, you know, like in the sense when your athletes, okay, so which game are you dealing right now? Sir, I'm dealing for cycling, sir. Yes. So cycling also you can keep like in the sense, okay, if you have kept a long-term goal for them, so divide your preparatory phases in such a way, okay, you need that, you know the time period for the general preparatory phase, okay, that is going to be 6 months, so not 6 months, but 4, 5, 6 weeks. So 6 weeks in general preparatory, or if you have a time, then you can divide into, okay, pre-competition phase, like if suppose if you have kept it a near competition, so like that you can divide, okay, 6 week, another 6 week for my pre-competition and another 6 week for my competition. So accordingly you can set your load also when they are in general preparatory phase. So there you can give them, okay, this much amount of sessions I am going to keep them with. Like sports specific, you are not going to train, but if you have done a needs analysis, okay, this athlete is lacking this, so you can work more, you want to work more for his strength, power, or whatever, okay. And when he's falling to the competition phase, so you will going to work more on the sports specific skill and you can work on that. So Yes, divide your plan or periodization schedule in such a way so that you can keep, like whether you want to focus on 3 competition, so your one cycle is there, second competition, your second cycle going to be there, third competition, then third cycle going to be there. So you can complete a 3 cycle and then after that divide into how much load you want to put them and which parameter you want to work more. yes, sir. Thank you, sir. Where exactly you are working? Which center are you working in, cyclist? Sir, I am in Bangalore, sir. I have a club. I am working with a club, sir. Okay, so you're not working with Sai, but you're working with the club, in club. Yes, sir. And how many athletes are you training currently? Sir, we have 18 athletes, sir. Okay. 18, And 18. okay, and that is a road cycling or which cycling events? Track cycling, sir. Track cycling. Okay, okay. So better you get a calendar and then divide into small blocks and then put them into preparatory phases, the phases which we have read, and then after that you can decide your load also. And Yes, sir. yes. Actually, what I have a doubt in this means we'll be dividing this, what and all you said now, Yes. and the percentage we'll be giving like a strength, powers, and all, no, different stage for individual riders we'll be giving. So I don't know whether it will work on them. Actually, 1 year before we planned one schedule for the athlete, for the girl. Okay. So somewhere we lacked while giving the training for that girl, under 14 girl. Okay. So how we can able to increase her performance? The thing is, if they are in general preparatory phase, suppose if they don't have any competition currently, so I would say try to work more on the lacking component which you are following. So see, the thing is, in sports scientists, when we are working as a team, so first we do screening for our athlete. Okay. In screening, general screening, health fitness screening in the sense, and then after that we do physio screening, after that we do strength and conditioning test batteries screening or the test parameters. So
then anthro is different, but in NIS we have different centers, like in the sense parameters that we usually work. So where we think this player is lacking this, so gradually we work on those. Okay, he's in general preparatory phase. So if I felt it, or the experts think that he's lacking strength, so we usually work, okay, let's work on strength for a few months. And then after that, move to next block. So likewise, you need to plan, like what actually your athletes are missing, where they are lacking. Either it's a sport specific skills they are lacking, or the fitness wise they are lacking. Okay, and then if they are lacking with something else, like injury is dominating them, okay, they are going for riding and then after that getting injury, means something there you need to screen and rule out. Yes, sir. Yeah. So try to work and be in touch. We'll work on that if you have any doubt. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, anyone has any question? It's 4:17. सर Yes. सर मैं ये पूछा, जैसे जूडो में ही एग्जांपल है कि जैसे वार्म अप के टाइम हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग के बीच में जैसे हम बोलते हैं 5 मीटर रनिंग करती है, 2 स्क्वाट्स करेंगे, फिर 5 मीटर रनिंग करेंगे एंड फ्रॉग जंप वगैरह। तो सर ये मेथड किस टाइप का है? जैसे कार्टव्हील वगैरह हुई, जैसे सर 5 मीटर रनिंग किया, उसके बाद 2 कार्टव्हील करेंगे, देन 5 मीटर रनिंग, देन फ्रॉग जंप, देन 5 मीटर रनिंग एंड पुशअप, ये सब सर वो मेथड क्या है और किस पर्पस के लिए यूज होता है? See, this method, I would say, again, it's a post-activation potentiation method. Like, kabhi kya karte hain ki you run and then ask them to do jumps, like in the sense sport jumps, or you run and then do kind of any activity. Okay, so it's like work is to rest ratio, in the sense ki you are giving active rest to those muscles. Okay, or sometimes we usually do, okay, run and then as you said कि okay cartwheel करनी है या फिर other कुछ activity करनी है. So जो actual training होती है वो होती है work is to rest का ratio, कि हाँ 10 सेकंड के लिए आप काम कर रहे हो and then 5 सेकंड के लिए you are taking a rest. एक होता है active rest, एक होता है rest in the sense कि when you are not performing anything, complete rest. Okay, and then second is that you do some activities but kind of less intensity ka activities. So it's like you are keeping those muscle to work, matlab actively. Okay, so that is active rest में उनको हम फिर exercise करने को बोलते हैं. So मेरा एक और क्वेश्चन था, depend करता है कि which type of training or which type of session you are taking and when you are using these methods. मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने सुबह मॉर्निंग में स्ट्रेंथ तक का सेशन किया, तो उसमें तो हमारा लोड हो गया, तो जैसे हमने बोल दिया अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंथ का सेशन 24 घंटे 48 घंटे बाद होगा, तो वो हमने रिकवरी का फेस रखा. Okay, तो सर उसके बीच में जो गेम की मैच प्रैक्टिस होती है, तो वो भी तो एक लोड में काउंट होगी? आपने मॉर्निंग में सेशन किया स्ट्रेंथ का, आफ्टर दैट यू आर गिविंग 1 hour का ब्रेक एंड देन आफ्टर दैट अगेन यू आर डूइंग स्ट्रेंथ वर्कआउट. हाँ सर, जैसे जूडो का ही हम, जैसे हमने सुबह वेट ट्रेनिंग की एंड देन 2 घंटे बाद हमारी जूडो प्रैक्टिस है, तो सर तो नेक्स्ट हमारा सेशन जो वेट ट्रेनिंग का होगा 2 दिन बाद है. Yes. तो हम जूडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह का लोड होगा ना फिर? Yes, but again I'm saying, see, the thing is, if you have done a heavy session, so you need to be very smart, like the evening session आपने वो कैसा रखा है. यहाँ पे क्या होता है, see, अभी I can't show you the thing, कि क्या होता है कि जब हम session decide करते हैं, suppose whenever they have a strength session, तो उनका जो शाम का सेशन होते हैं कोचेस रखते हैं, वो बिल्कुल लाइट सेशन होता है. उसमें
ना कोई आपकी फाइट्स है, और जस्ट स्टैंडिंग आप उसको भी हाँ उची को या फिर स्टैंडिंग स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, एंड देन थ्रोइंग भी नहीं कर रहे आप, जस्ट स्टैंडिंग यू आर डूइंग दैट। सो वो क्या होता है कि यू नीड टू सी कि कौन सा सेशन हैवी रखें। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आज अगर रंदौरी हुआ एंड देन शाम को अगर आई कांट डू स्ट्रेंथ वर्कआउट, दैट इज गोइंग टू बी हैवी। अगर किसी कोच ने रखा होगा कि शाम को सर आई वांट टू कीप अ स्ट्रेंथ सेशन फॉर माय एथलीट्स, सो आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी लाइट सेशन, very light session. I am not stressing them with the heavy load कि आप 50% like 90% लोड डाल के आप एक्सरसाइज करो और 60% लोड डाल के। सो इन दोज थिंग्स यू हैव टू बी कि सुबह का सेशन का लोड कितना आप रख रहे हो, ओके, एंड देन शाम का फिर ग्रेजुअली आपको लाइट रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ द टाइम जब when last time when I was with Indian badminton team also, so there also they were keeping like in that way, morning if they are doing heavy session, evening should be light। तो वो क्या होता है, you need to sit with your experts, you need to, whenever you are planning for 1 week का training, you need to sit with your experts, those who are working with your team, and then after that you can decide कि हाँ कितना कितना लोड मुझे डालना है और कब कब हमने उनको पुश करना है। ओके सर क्या आप ये प्लानिंग सेशन का कुछ चार्ट शेयर कर सकते हैं क्या? See, right now I don't have chart, but it's in my laptop. I can show you, but it's not going to be visible. See, the thing is, next time I'll do one thing. Next जो हमारा ये होगा discussion session, so I'll show you the RP कैसे mention किया हुआ and everything, कि कैसे we usually plan. But not Okay, sir. I'm sorry for that. Yes. बट आई एम टेलिंग यू, सी आई एम श्योर सबका शेड्यूल सेम ही रहेगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एंड देन अभी यहाँ पे वो नहीं है। तो जब जैसे वो रहता है ना कि आपने सेशन डिसाइड किया है कौन सा रहेगा, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रहेगा, उसके नीचे आप एक कॉलम बना लो, टाइम कितना लंबा वो सेशन होगा, उसके बाद आप उसका वो लिख लो आरपी कि इसका कितना होगा, रेट ऑफ परसीविंग एक्सर्शन की ये मीडियम सेशन होने वाला है या लाइट सेशन होने वाला है, या फिर ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो लाइट है या मीडियम है। अगर लाइट हुआ तो कीप इट नीचे वाला सेशन मीडियम और हैवी। नेक्स्ट डे का भी आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि 2 मैं मीडियम सेशन दे रही हूँ, and then Wednesday I'm keeping a light session kind of recovery. So likewise you can plan. सर और टीम गेम का प्लान अलग होगा और इंडिविजुअल्स किसी का प्लान अलग होगा? टीम गेम इन द सेंस अगर आप अभी जैसे एथलीट्स के साथ काम कर रहे हो, 50 एथलीट्स के साथ और 56 और 100 एथलीट्स के साथ काम कर रहे हो, where whole team is working, and then when you are working with the individual athlete, so obviously his schedule going to be different। अब बैडमिंटन का अगर प्लेयर है, if he is training in a group, okay, so it comes as a team, right? और आप वेट कैटेगरी के, नॉट वेट कैटेगरी बट आप उसको एलीट एथलीट है या फिर इंटरमीडिएट है या फिर बिगिनर्स है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो कि विच कैटेगरी प्लेयर आई एम गोइंग टू ट्रेन इन दिस सेशन। उनका प्लान अलग होगा और जो एडवांस लेवल एथलीट रहेंगे उनका ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उनका फिर लोड भी ज्यादा होगा, राइट? You can't give a same load to the beginner और उनको same load to the advanced level athlete। But जब आती है जैसे टीम गेम की, तो वहां पे as a team you need to think and then उसके लिए फिर आप implement करते हो। But कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि उस टीम में कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिनके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, उनके लिए you can design a separate or different session for them। So you can segregate those athletes. So you need to segregate those your athletes कि कौन-कौन सी categories में आते हैं, and then you can decide a schedule for them. सर यही तो सीखना है कि जो हम प्लान बनाते हैं वो सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे हम, किसको चेक करवाएंगे?
Yeah, you need to send us. I don't know. I'll ask my team also. Like you guys are, you guys have these questions or issues. So you can do one thing. If you have a, do you guys have a WhatsApp group or what? Yes, sir, we have, sir. So one person can take a responsibility to send a query and write it down and then drop those query in that group. I'll try to coordinate with the coordinators and then we'll get back to you. You can write down your queries because this discussion session is only purely for the discussion that we have released on the topic. जो हमने टॉपिक रिलीज किए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है उसके बारे में आप पूछ सकते हो, और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग you can write it down and then email to the respective person who is leading that group. Okay? Yes, sir. Okay. Yes, it's 4:27. I'll take 2 more questions if anyone has, then after that we'll disconnect because I have another session after that. Go ahead, anyone has any question? Yeah, good evening, sir. Sorry? Good evening, sir. Good evening. So I can't understand properly the meaning of supercompensation. And is there any relationship between supercompensation and adaptation, training adaptation? Yes, let me show you. Okay. Yes, can you see a chart over here? Yes, sir. Yeah, but लेकिन clear नहीं है, sir. No problem. I just want to mark. Okay, so here you can see this line, right? When you start Yes, sir. training, your body get fatigued. थकावट में जाती है. उसके साथ क्या होता है, परफॉर्मेंस भी नीचे गिरती रहती है. ठीक है, फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है when you give a break. if अगर आप ब्रेक देते हो तो बॉडी क्या है, वो स्पाइक अप करती है फिटनेस से. ठीक है, सो जब वो स्पाइकिंग पॉइंट आता है, आपकी नोट्स में भी एक जगह पे होगा कि जब ट्रेनिंग वाला एथलीट हो, एक ऐसा चार्ट होगा. ओके, सो दिस और एक ये रहेगा, दिस समथिंग लाइक दैट. ओके, सो क्या होता है कि जब हम ब्रेक दे देते हैं अपनी ट्रेनिंग को, उसके बाद जो स्पाइकिंग अप होती है, दैट इज योर सुपर कॉम्पनसेशन. ओके, yes, sir. सो जब हम ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फटीग आती रहती है, हमारी परफॉर्मेंस नीचे गिरती रहती है. ओके, एक पॉइंट आया जब आपने उसको स्टिमुलस को कम कर दिया तो हमारी बॉडी जंप अप करती है. ओके, एंड देन अगेन स्टार्टेड विद अनदर सर्कल. सो जो जंपिंग अप फेज जो होता है हमारी ट्रेनिंग में, दैट इज कॉल्ड सुपर कंपनसेशन फेज. ओके, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप लोड, दो उसके मेथड्स हैं जो इफेक्ट करते हैं. एक आपने लोड जो है वो कम दिया है और एक जो है लोड आपने ज्यादा दे दिया है. जब आप लोड ज्यादा देते हो और ब्रेक नहीं देते तो वो सुपर कंपनसेशन पॉइंट जो हमें अचीव करना होता है वो नहीं आ पाता और कम आता है. ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग स्टिमुलस जो है वो कम दिया हुआ है तो जो पॉइंट जो है जितना एक्चुअल में चाहिए होता है उससे वो ज्यादा या फिर मतलब आता ही नहीं, वो अचीव भी नहीं कर पाते हैं. सो जस्ट गो थ्रू द मटेरियल, देयर इज दैट फेज, तो आपको लग जाएगा पता. एंड देन आफ्टर दैट आपने पूछा था अडैप्टेशन, राइट? Adaptation, yes, sir. अडैप्टेशन. सो अडैप्टेशन क्या होता है कि जब आप एक स्टिमुलस आप बॉडी को देते हो, जैसे कि if I'm not good with respect to endurance, ठीक है, बट आप जब स्टिमुलस देते हो तो मेरी बॉडी क्या होती है कि उस लोड के लिए वो यूज्ड टू हो जाती है. ठीक है, और फिर वो जब आप एक्स्ट्रा लोड उसमें डालते हो तो वो अच्छे से उसको झेल पाती है, मतलब इन द सेंस कि इजिली टॉलरेट कर पाती है. सो जो टॉलरेंस हो जाती है ना, एक बॉडी हमारी टॉलरेट कर जाती है लोड को, दैट इज कॉल्ड कि ओके
my body is getting adapted to that load. जो चेंजेस हमारे मसल्स में आते हैं, जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो, ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने को बोलते हैं आप ज्यादा थकते हो, राइट? आपको ज्यादा थकान आती है, बट एट द एंड कुछ टाइम आप काम करोगे, वर्कआउट करते हो, उसके बाद जो है हमारी बॉडी इजीली उसको वर्कआउट को लेना स्टार्ट कर देती है, राइट? सो दैट इज कि मेरी बॉडी अडेप्ट हुई है किसी स्टिमुलस को, सो दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन, व्हेन यू आर पुटिंग अ particular load and then your body get adapted or used to what that stimulus. तो सर मतलब ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एडेप्टेशन ज्यादा हो तो उसका सुपर कॉम्पेंसेशन बेटर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं? Yes. If I'm adapted to good stimulus in the sense कि my body is like ज्यादा लोड हम डालेंगे, मतलब अच्छी एडेप्टेशन होगी, मतलब आई कैन, अगर मैंने अच्छा ब्रेक दिया और अच्छा लोड दिया होगा तो सुपर कॉम्पेंसेशन भी अच्छा होगा. इट्स रिलेटेड विद फिटनेस एंड फटीग, ठीक है? अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स विद योर ट्रेनिंग लोड जो आप डालते हो, राइट? अगर मेरी बॉडी की फिटनेस अच्छी नहीं है तो मेरे को वो सुपर कॉम्पेंसेशन नहीं आएगा जो एक्चुअली में मुझे चाहिए होता है. I think it's in your materials. Just go through that, and then अगर still yes sir. हाँ, अगर आपको डाउट होगा तो just get back to me. Next session में definitely get back. Okay sir. Okay. Thank you sir. Welcome. Okay, it's already 4:33. I think we should wind the session. Anyone has any question now? Last one, because I am getting calls for the next lecture. So I think we should wind up. Okay, guys, thank you so much for A very good session, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes. Anytime. Okay, we'll see you next time with a lot of questions. So please be prepared for the next sessions. Okay. Yes sir. Thank you so much. Bye. Okay, sir. Okay, ji.